move into the second year of this tournament, I really appreciate, from the bottom of my heart, I appreciate Rotary Club of Borivali to have considered our request to get associated with this sport and sponsor this event for us. So big round of applause for Rotary Club of Borivali, Harish Bhai Chandara. So guys, we are running short of time. So as the first board is in progress, I would like to announce that to make this association stronger with MCF and RCB, as a mark of souvenir, we are presenting this t-shirts to the dignitaries from Rotary Club of Borivali. So I request Satish Bhai.
Vice President of MCF, Dr. Carrom, President of Rotary Club of Borivali, Haribhai, Chandarana, Secretary of Maharashtra Carrom Association, Mr. Kedar, and today's chief guest, District Governor Chetan Desai for the 61st program. All the members of MCF, all the members of Rotary Club of Borivali, all the players, participants, dignitaries, invited guests. On behalf of MCF Club, I welcome you all for this 10th Maharashtra State Ranking Carrom Championship. दोस्तों, इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे MCF क्लब के कैरम कन्वीनर महर्षि देसाई, उनके लिए जोरदार तालियां। इट रियली वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस टूर्नामेंट। कल रात को लेट नाइट ये पूरा जो आप देख रहे हैं, जो सेटअप देख रहे हैं, पूरा उन्होंने करने के बाद ही वो जाकर चैन की नींद से सोए होंगे, मुझे लग रहा है। काफी मेहनत लगती है। अलॉन्ग विद दैट हेमंत भाई हमारे क्लब के कमेटी में है, हमारे सब कमेटी में कैरम पे बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू सो मच। एंड आई रियली we on behalf of MCF are thankful to Rotary Club of Borivali। 1 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप दिया है उन्होंने। थैंक यू सो मच। ये सेकेंड ईयर है दे आर स्पॉन्सरिंग दिस टूर्नामेंट। ये जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा योगदान है रोटरी क्लब बोरीवली का। ऐसे ही आगे आप लोग कंट्रीब्यूट करते रहिए। आई वुड लाइक टू मेक 2-3 अनाउंसमेंट्स। एक तो सबसे पहले हमारा आज इनॉग्रेशन फंक्शन है कैरम चैंपियनशिप का। आप लोग आए यहाँ पर, थैंक यू सो मच। मॉर्निंग में ऑल द बेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स पार्टिसिपेंट्स फॉर दिस टूर्नामेंट। पूरे वर्ल्ड में 2 लाख से ज़्यादा तो ऑनलाइन इसको देखने वाले हैं, ऐसा मुझे बताया है। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से खेलो, मज़ा आना चाहिए। हमारा जो इंडिया है उसको नंबर 1 पे आप बना के रखो, यही हमारी इनफैक्ट प्रार्थना है। सेकेंडली, टुडे वी आर इनॉग्रेटिंग MPL, जो हमारा पिकल बॉल का प्रीमियर लीग है, उसका शाम को 5:30 को इनॉग्रेशन है। आई इनवाइट ऑल ऑफ यू कि शाम को भी वहाँ पर आप जरूर से आइए। बहुत अच्छा इनॉग्रेशन, बहुत अच्छा इवेंट है। इनफैक्ट ऑन 27 अप्रैल वी आर सेलिब्रेटिंग अवर एनुअल डे, तो उसमें भी ऑल आर इनवाइटेड। मिस्टर हिमल भाई हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर, उसमें वर्किंग दे इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट। इसके अलावा आई वुड लाइक टू टेल यू, इनफैक्ट आई एम वेरी ग्लेड टू अनाउंस दैट MCF जो है उसकी बैडमिंटन टीम A, उन्होंने ऑल ओवर मुंबई का जो अभी टूर्नामेंट हुआ था टीम चैंपियनशिप का, उसमें नंबर 1 हम लोगों ने विनिंग कप लिफ्ट किया। लास्ट वीक में ही उसका फाइनल्स था एट बॉम्बे जिमखाना। विद दिस once again I wish all the best to all the players and participants. Thank you so much once again. Thank you. So before we move on to the next speech, I request President of Rotary Club of Borivali to present the check to Advocate Satish Sharma for the sponsorship. In fact, all the more pride to receive it from our District Governor Chetan Desai. So next, I request Shri Arun Kedar to say a few words. नमस्कार। सबसे पहले तो मैं MCF क्लब जो 10वीं बार इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है उनको मैं बधाई देता हूँ। रोटरी क्लब के गवर्नर और पूरी उनकी जो टीम है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लगातार दूसरी बार यहाँ पर और पार्ला में भी वो हमारे से जुड़े हुए हैं और लगातार हमारी कैरम के टूर्नामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज बड़ी हर्ष की और बड़ी गर्व की बात है, आज यहाँ पर इनॉग्रेशन होने जा रहा है। एक स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट लगातार 10वीं बार यहाँ पर आयोजित हो रही है, परंतु आज एक सबसे बड़ी बात कैरम के विश्व के लिए गौरव वश ऐसी बात है कि आज महाराष्ट्र के 5 खिलाड़ियों को छत्रपति पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। 2022-23 और 2023-24 इन 2 वर्षों के लिए महाराष्ट्र शासन का जो सबसे बड़ा छत्रपति पुरस्कार है वो हमारे आज 5 खिलाड़ियों को मिल रहा है। आज सवेरे 11 बजे पुणे में वो अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाएगा। संदीप दिवे विश्व विजेता, अभिजीत त्रिपणकर इंटरनेशनल कैरम प्लेयर, नीलम घुड़के इंटरनेशनल कैरम प्लेयर और उसके पश्चात 2023-24 के लिए
आकांक्षा कदम और योगेश ढोंगड़े, ऐसे 5 खिलाड़ियों को कैरम के इतिहास में ये पहली बार है कि एक ही समय पर 5 खिलाड़ियों को इस बड़े अवार्ड से नवाजा जाएगा। मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन की ताकत है और उस ताकत के पीछे एमसीएफ क्लब और रोटरी क्लब जैसे जो हमारे पुरस्कर्ता है अजय है वो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथ खड़े हैं। मैं ये खुशी आप लोगों से शेयर करना चाहता था। धन्यवाद। महर्षि जी, आप आगे कार्यक्रम जारी कीजिए। Thank you, sir. I now request President of Rotary Club of Borivali to say a few words, please. Good morning to all of you. Today is our Chief Guest, District Governor Chetan Desai, MCF के Honorary Secretary सतीश जी, Vice President लालन सर, महाराष्ट्र के कैरम एसोसिएशन के सेक्रेटरी अरुण जी, जो आज ये हम कहते हैं ना कि आज हम यहाँ सब मिले हैं और जो कंपटीशन जो स्टार्ट हो रही है, मुझे लगता है कि हम कुछ भी करते हैं ना तो सभी लोगों का साथ सहकार की जरूरत होती है, लेकिन कोई ना कोई एक लीडर ऐसा होता है जिसका एक ड्रीम होता है और वो उस पूरे इवेंट को एक ऐसे लेवल पे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था पहले, जैसे मुझे बताया था कि भाई ये कैरम टूर्नामेंट महाराष्ट्र एमसीएफ कर रही है, ऑर्गेनाइज करी है, तो मुझे लगा कि क्लब के लेवल पे एक होगी यहाँ के, तो मैंने इतना खास इंटरेस्ट नहीं लिया। और जब मैं मिलने आया, मैं हेमंत भाई मुझे लेके आया और मैं महाराष्ट्र से हम लोग मिले, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली कैरम एक्चुअली है क्या, और कैरम के लिए जो प्लेयर्स क्लब लेवल पे खेलते हैं या स्टेट लेवल पे खेलते हैं या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल पे लेवल पे खेलते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ में आया। तब समझ में आया जब मैं यहाँ आया। कहीं ना कहीं हमें ये देखना होता है कि जब हम किस चीज पे जाते हैं तो उसके ऊपर जब बैठते बात करते डिस्कशन करते समझते, तब जाके पता चलता है कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है। और ये सब तभी रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली की तरफ से, या अगर एज ए मैं इस साल का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे तभी अपॉर्चुनिटी मिली जब ऐसे व्यक्ति जो ये सब एक्टिविटी में लीड तो लेते, लेकिन लोगों को उनके साथ जो जुड़े हैं उन लोगों को डिटेल में समझा पाते और समझा पाते जब वो दिल से वो चीजें महसूस करते हैं। सो वो सब क्रेडिट मैं महर्षि को देता हूँ। वो हमारे रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली का भी मेंबर है और सालों से हम लोग जानते हैं एक दूसरे से। बट यहाँ मैं आया और वो और हेमंत आसर दोनों ने मुझे जिस तरह से एक्सप्लेन किया, तो मुझे लगा कि वाई कैरम स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हम सब मानते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले करती है ये हम सब जानते ही हैं। क्योंकि जब स्पोर्ट्स हम खेलते हैं ना तो हमारा एक अपने आप में भी एक ऐसी सोच आ जाती है कि स्पोर्ट्समैनशिप अपनी होनी चाहिए और जीवन में हार जीत कहीं ना कहीं, क्योंकि जीवन में नॉट ओनली द स्पोर्ट्स बट जीवन एक संघर्ष ही है, पूरा जीवन अपना रहता है और उसमें कहीं ऐसे टाइमिंग आते हैं कि जहां हमारा जीवन में हार जीत का सामना हम करते हैं। तो स्पोर्ट्स हमें सीखता आती है कि ठीक है, एक गेम में अगर हम हार गए तो कल दूसरी गेम खेल पाएंगे, और वो प्रोसेस में जो एंजॉयमेंट मिलती है वो तो हम सब जानते ही है। और सबसे बड़ी कैरम की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कैरम एक ऐसा सभी एज ग्रुप के, मैं जब छोटा था तब मैं भी एज कैरम में खेलने जाता था, और उसके पीछे का दो चीजें मुझे हमेशा मुझे समझ में आई। एक है कि कैरम खेलते हैं तो हमारा फोकस जो है ना वो एकदम क्लियर हो जाता है, हमारा गोल मतलब अपना ध्यान जो है वो स्कूल में जब पढ़ते हैं तभी ये कैरम, इसीलिए मुझे याद है मेरे एक टीचर था मुझे ये समझाते थे कि कैरम रोज आधा घंटा इसलिए आपको खेलना चाहिए क्योंकि उससे आपको फोकस आपका क्लियर हो जाता है और पढ़ने में आप में और ऑटोमेटिकली एजुकेशन में आप पढ़ते हो तभी आपका फोकस उसमें रहता है। दूसरा मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा कैरम खेलने में अच्छा एंजॉय करते हैं वो है सीनियर सिटीजन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीनियर सिटीजन जो होते हैं एक एज पड़ाव होने के बाद फिजिकली इतना हम फिट नहीं रह पाते और ग्राउंड में जाके ज़्यादा हम खेल नहीं पाते, लेकिन कैरम एक ऐसा है कि हाँ बैठ के आप अच्छी तरह से आप खेल पाते हो और आपका अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते हो
और उससे क्या होता है, सीनियर सिटीजन को बेनिफिट क्या हो जाता है, ये याद है कि मतलब सबको क्या बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि कैरम से आपकी जो मेमोरी पावर है ना वो इम्प्रूव होती है। अगर देखोगे ना तो कैरम से आपकी याद शक्ति बहुत बढ़ती है। सो ऐसे जो स्पोर्ट्स है वो अभी अरुण जी ने बताया, महाराष्ट्र स्टेट लेवल से वो इतने अच्छे प्लेयर थे और आज वो इतनी एक्टिविटी करते हैं। और मैं और एमसीएफ क्लब जैसे बहुत क्लब है तो बहुत है, पर बहुत कम ऐसी क्लब होती है जिसमें सभी स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट करते हैं। और प्रमोट करने में आपने जो एमसीएफ आज 10 साल से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है, और पता चला कि नॉट अवर स्टेट, नॉट अवर इंडिया, बट वर्ल्ड लेवल में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आज एमसीएफ नंबर 1 है। तो मैं बहुत क्लैप करना चाहूँगा, कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा एमसीएफ की पूरी टीम मेंबर को। और आने वाले दिनों के अंदर भी आप ऐसी अच्छी टूर्नामेंट करते रहेंगे। रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली की तरफ से हमें जो आपके साथ काम इस इवेंट ऑर्गेनाइज करने में जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली, थैंक यू। एंड वी ऑलवेज रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली बिलीव, in fact Rotary always believe, and the leader like the district governor चेतन देसाई always हमें ये सिखाते हैं कि हमें सभी फोकस एरिया पे हमें काम करना चाहिए। कम्युनिटी सर्विस तो हमारा करना ही है, लेकिन एक फेलोशिप, बॉन्डिंग एंड नेटवर्किंग एंड सपोर्टिंग रोल टू द अदर एनजीओ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी वजह से समाज में एक बड़ी इम्पैक्ट पड़ती है कि ये सब संस्थाओं साथ में जुड़ते हुए सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। सो ऐसी सोच हमारे लीडर की तरफ से हमें मिलती है, एंड देन और एज ए प्रेसिडेंट हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, क्यों नहीं हम इसमें भी हम पार्ट लें और हम साथ करें। तो आज हमारे जितने भी हमारे रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली के मेंबर है, एमसीएफ के मेंबर है, और जो भी प्लेयर है, सभी को मैं खूब खूब धन्यवाद और अभिनंदन देता हूं। और प्लेयरों को मैं हमारी रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आप सबको विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप 2 दिन का ये संडे तक का जो ये एक इवेंट है वो आपको वन ऑफ द बेस्ट, आप पूरे साल में आपको एनर्जी मिलेगी इस 2 दिन की आप जो प्ले करोगे, क्योंकि ये मेमोरी जो हमें है ना वही हमें जीवन में आगे लेके जाती है और एंजॉय करते हैं। सो वंस अगेन आप सबको खूब अभिनंदन एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you Haribhai for the wise words from a very dynamic personality like Haribhai. Thank you so much. I now request our chief guest, Rotarian Chetan Desai, to say a few words, please. गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाश्ता करा ना? गुड मॉर्निंग। तो रानी तो पप्पा नहीं, मुन्ना भाई एमबीबीएस का फेमस सीन है, कैरम रमवानु, जूस पीवानु, मजा नहीं लाइफ, एंड दैट इज व्हाट कैरम गिव्स यू अ प्योर जॉय। और जो आज हम लोग इतने सारे चैंपियंस इकट्ठे हुए हैं, आई एम विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई एम श्योर यू आर नॉट हियर टू, हमारा गवर्नर और प्रेसिडेंट का हमारा तकलीफ क्या है, हम लोग एक बार चालू हो जाते हैं तो अटकते ही नहीं, तो ये हम नहीं करेंगे। बट एक छोटी सी बात मेरी रख दूंगा मैं यहाँ पे कि मंडपेश्वर सिविक फेडरेशन, महर्षि, सतीश, ललन जी, एंड सबसे ज़्यादा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अरुण भाई को सबसे ज़्यादा तालीम मिलनी चाहिए, बिकॉज हिज एफर्ट्स टू टेक दिस स्पोर्ट्स टू इंटरनेशनल लेवल। मैंने उनको बात करते हुए सुना है, उनके दिल में यही है कि ये स्पोर्ट्स को मैं कितनी आगे लेके जा सकूं। हमने अभी लाइटिंग ऑफ लैम्प सेरेमनी किया, आपने देखा ना, वो दीप प्रज्वलन जिसको बोलते हैं वो किया, तो उसके अंदर आपने देखा रहेगा कि महर्षि और दूसरे जो पदाधिकारी थे वो उन्होंने जो एक मान्यवर जो कर रहे थे लाइटिंग ऑफ लैम्प, उनको टच करके उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो संस्कृत में ये पूरी प्रोसेस, जब कोई आहुति भी देता है हमारे हिंदू धर्म में, तो हमारे पार्टनर हमको टच करके रखते हैं, तो उसका मीनिंग संस्कृत में होता है मम। मम इज स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन, मम इज मैं आपके साथ हूँ, मम इज दैट वी कैन ग्रो टुगेदर, एंड दिस spirit of collaboration that I will assure you, all of you, that Rotary in this part of the world having 123 clubs, 6,700 Rotarians, ये साल आपने 2 क्लबों को देखा रहेगा जो ये मुंबई पार्लेश्वर एंड बोरीवली, that they have sponsored this particular tournament। आगे जाके हम आपके साथ और ज्वाइन होंगे, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ आपको, and I will make sure that future leaders they get to know about this tournament, and we will ensure that more and more clubs participate
in doing this in a mega scale. Thank you so much. I request Hemant Bhai to please present this souvenir to Dr. Dharmaji Shinde. He is here now. Please come forward, sir. And as this presentation goes on, I'd like you guys to give a big round of applause to my subcommittee members, Anand Saraote, Parag Nadkarni, Darius Sangoy, Bhavik Damania. All those are, many of us are here. A big round of applause from them, because without their support this was not possible. Secondly, the staff of MCF. You see this, they also have done a phenomenal job in getting this thing organized. A big round of applause for them as well. That's it from the inauguration ceremony. And our chief guest has already declared the tournament open. So let's proceed with the matches. Thank you so much.
we had, as informed on the entry forms, that the slam prizes will be given from quarterfinal onwards. So from quarterfinal onwards, we had 2 white slams, and those have been scored by Omkar Tilak and Pankaj Pawar. But before I call them for this awarding these prizes, I request our subcommittee member Parag Nadkarni to please come forward and give away the prizes. First, I request Omkar Tilak to please come up and accept this award for white slam. He is left. Can someone come on his behalf to collect this? I request anyone from... Okay, Ketan is here. Oh, our ex-president and corporator Shri Harish Cheda sir is here. I request him. Welcome, sir. Next, we have Pankaj Pawar, who scored white slam in the finals in the first set. Yes, Pankaj, please come forward. Guys, it was a treat to watch him in the finals and he scored that white slam. Now we take a small break and we'll like to hear some wise words from the people sitting on the dais here. So first I request Shri Arun Kedar sir to please say a few words. नमस्कार, आदरणीय जम्बू सराय जी, शर्मा जी, एमसीएफ के सभी पदाधिकारी, मेरे महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन के सभी साथी और यहाँ पर इस टूर्नामेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो सभी खिलाड़ी। सबसे पहले तो मैं एमसीएफ को बधाई देता हूँ। लगातार 10 साल से यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बढ़िया टूर्नामेंट हर साल आप लोग कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट की खासियत ये रही है कि इस टूर्नामेंट में 3-4 नए सितारे हमको दिखाई दिए हैं। नीलांश चिपळूणकर पहली बार टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल खेला। अंडर 18 का एक आध खिलाड़ी जब सीनियर कैटेगरी में और विशेष रूप से महाराष्ट्र जैसे राज्य में जब क्वार्टर फाइनल खेलते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय में महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात है। दूसरा मैं जिक्र करना चाहूँगा ओमकार तिलक, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसके खेल में भी काफी निखार आया है और वो भी इस टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल खेला। और तीसरी खिलाड़ी जो रही है वो प्राजक्ता नारायणकर, जो पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलते हैं। जहाँ तक महाराष्ट्र में महिलाओं का जो भी सहभाग है या जो भी पार्टिसिपेशन पिछले कई सालों से मैंने देखा है, विशेष रूप से एक ही लेवल के लगभग 10 से 12 खिलाड़ी महिला कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं पिछले कई सालों से। परंतु काजल कुमारी की वजह से हो या आयशा की वजह से हो, ये खिलाड़ी काफी कम फाइनल्स खेले हैं। परंतु इस बार इस टूर्नामेंट में काजल कुमारी नहीं खेली। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ये खिलाड़ी कुछ कम है, क्योंकि प्राजक्ता है अभी कल ही आकांक्षा कदम को छत्रपति पुरस्कार से नवाजा गया।
जिस तरह से बताया था कि इस साल 5 खिलाड़ियों को छत्रपति पुरस्कार मिला है और आने वाले समय में समृद्धि गाड़ीगांवकर, प्राजक्ता, मधुरा देवड़े और विशेष रूप से हमारी पालघर की जो खिलाड़ी है श्रुति सोनावणे, ये भी मैं समझता हूँ कि उस कतार में है। इस बार मैंने पहली बार कई अरसे के बाद श्रुति सोनावणे को काफी अच्छी तरह से खेलते हुए देखा। उसका भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उसका भी जिक्र होना जरूरी है। आने वाले समय में एमसीएफ की तरफ से मैं चाहूंगा कि कुछ अलग एक तरह से एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल से स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट तो हो रही है, परंतु ये जो चैंपियंस है, ये चैंपियंस स्टेट के पहले जो 8 खिलाड़ी या 16 खिलाड़ी है, उनके लिए एक अलग तरह से चैंपियंस ऑफ चैंपियन करके कोई अगर एक्टिविटी अगर यहाँ पर होती है तो मैं समझता हूँ कि एक अलग एक्टिविटी यहाँ पर होगी। पंकज पवार पिछली टूर्नामेंट जीता था जो रोटरी ने पुरस्कृत की थी। पार्लेश्वर में हर साल हमारी टूर्नामेंट होती है। यहाँ पर भी जो टूर्नामेंट आयोजित की गई, उस टूर्नामेंट को भी रोटरी क्लब ने ही पुरस्कृत किया था। और जिस तरह से पिछली बार पंकज पवार ने अपना खेल वहां पर दिखाकर प्रशांत मोरे को हराया था, वहां पर चैंपियन हुआ था, उसी को शायद वो यहाँ पर दोहराएगा ऐसे लग रहा था, क्योंकि पिछले कई अरसे से मैं ज्यादा मैचेस देखता नहीं हूँ, परंतु इस बार मैं फाइनल मैच देखने के लिए वहां पर आपका जो कैरम का अलग से आपने रूम बनाया, वहां पर हम लोग बैठे थे, बड़े स्क्रीन के ऊपर हम मैच देख रहे थे। और मैंने कहा था कि जिस तरह से पहले गेम में वो खेल रहा है तो पंकज पवार ही यहाँ पर चैंपियन होगा, परंतु मैं भूल गया था कि टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर ने अपना कमाल दिखाया। गुफरान आप सभी लोग जानते हैं कि वो 2 बार स्विस चैंपियन रह चुका है और महाराष्ट्र का नहीं बल्कि पूरे देश का वो एक बढ़िया खिलाड़ी उसने अपने आप को साबित किया है। तो टाइगर आपको सलाम है। सभी को मैं बधाई देता हूँ, विशेष रूप से जीतने वाले खिलाड़ियों को मैं विशेष रूप से यहाँ पर बधाई देता हूँ और अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय। Thank you, Arun sir. Next, I'll request our Honorary Secretary, Advocate Satish Sharma sir, to please say a few words. President. Honorary President of MCF, nearby, महाराष्ट्र स्टेट कैरम एसोसिएशन के सेक्रेटरी अरुण केदार जी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट हरीश भाई, मैनेजिंग कमेटी मेंबर हेमंत भाई, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर लालन एंड मैनेजिंग कमेटी मेंबर चंदू भाई, एंड ऑफ कोर्स ये पूरे टूर्नामेंट के मैं कहूँगा हीरो हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर महेंद्र भाई। 2 दिन पहले ही हमने मॉर्निंग में इस टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन किया था और मुझे बताया गया कि अराउंड 300 पार्टिसिपेंट्स आते हैं। तो मैं बोला इसका संडे को कंक्लूड कैसे होगा, बट रियली आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द एंटायर सब कमिटी ऑफ कैरम डिवीजन कि 2-3 दिन में ये यहाँ पर हमने पूरा प्रोग्राम इतना सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करके और यहाँ पर आज हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जोरदार तालियां एक बार। I would like to thank the MCF 10वीं बार यहाँ पर लगातार ये स्टेट कैरम टूर्नामेंट का आयोजन किया है एंड आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक द रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली जिन्होंने स्पॉन्सरशिप सेकेंड ईयर में कंटिन्यू यहाँ पर दी है। आज यहाँ पर वो आ नहीं सके, कोई बात नहीं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ रोटरी क्लब ओनली, तो उनकी प्रेजेंस नहीं भी है तो आई कैन रिप्रेजेंट देम ओवर हियर। महेश भाई भी आल्सो देयर, हेमंत भाई देयर। Sir, sorry to interrupt you for a moment, but 3 dignitaries from Rotary Club of Borivali has just joined us. Very nice. Hemant
Maharashtra is there, and past president Hemant Mehta sir is there. Table Square. One more member, Advocate Sumita Rao is here. So रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली के मेंबर्स के लिए जोरदार तालियां. Thank you for the sponsorship of this wonderful tournament. And I would also like to thank all the referees, all the fraternity from the Carrom world and the MCF staff. उनकी भी बहुत मेहनत है इसमें. तो सबके लिए जोरदार तालियां और congratulations to all the winners. बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ है और all the best for all the future events. Thank you so much. thank you Satish bhai. I now request our chief guest for this prize distribution ceremony, our honorary president CA Nihar Jambusaria sir, to please say a few words. MCF के सेक्रेटरी सतीश भाई, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नालन, हमारे पास प्रेसिडेंट हरीश भाई, करम जी फ्रॉम महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन, हमारे कमेटी मेंबर्स हेमंत भाई, चंदू भाई, और जैसे सतीश भाई ने बताया वेरी राइटली द हीरो ऑफ द एंटायर इवेंट महर्षि देसाई who organized this event so nicely, so meticulously कि आज 10वें साल में भी हमें लग रहा है कि हर साल बाहर की संस्थाओं के साथ तो हम कॉम्पीट कर रहे हैं और 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वही दिखा रहा है, लेकिन हम हमारे खुद के साथ भी कॉम्पीट कर रहे हैं. हर साल वो पास्ट ईयर का बैरियर क्रॉस करके हम नया एक लेवल बना रहे हैं. रोटरी क्लब के मेंबर्स को भी बहुत बहुत बधाई, आप सभी ने जो जिस तरह से सपोर्ट किया इस इवेंट को. और जैसे अरुण जी ने बताया कि टाइगर अभी जिंदा भी है और नए नए टाइगर्स भी जन्म ले रहे हैं. तो MCF में जो हमारी पॉलिसी रही है कि जो नए नए स्पोर्ट्समैन जो भी फील्ड में आगे उभर के आ रहे हैं, और आपका सजेशन भी बहुत अच्छा है कि उनके लिए हम कुछ स्पेशल करें कि वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर भी जाएं और जितना सेटिस्फेक्शन उनको और देश को मिले उतना हमें भी, MCF को भी वो सेटिस्फेक्शन मिले कि हमारे यंग स्पोर्ट्समैन यहाँ से शुरू करके कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए. अगर बोरीवली का एग्जाम्पल ले तो रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान भी एक उदाहरण है कि जो बोरीवली से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुँच गया. तो वही हम देखना चाहेंगे और ईयर आफ्टर ईयर आप इस इवेंट को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से और जो भी नए सजेशंस आए उसको इनकॉर्पोरेट करके जितना सक्सेसफुल बना सके. आज MCF में अगर हम बात करें तो पिछले 10 दिन से जैसे कि यहाँ एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रहा है. क्रिकेट टूर्नामेंट कंप्लीट हुई, अभी कैरम टूर्नामेंट कंप्लीट हुई, पिकल बॉल टूर्नामेंट चालू थी, शायद वो भी कंप्लीट हो गई होगी. तो यहाँ बहुत अच्छे माहौल में स्पोर्ट्स के इवेंट्स एक के बाद एक हो रहे हैं और समर कैंप भी चल रहा है, सतीश भाई ने बताया. तो वैसे भी MCF स्पोर्ट्स के साथ साथ कल्चरल इवेंट्स और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ को एनकम्पास करके बहुत सारे इवेंट्स कर रहा है. और इसमें ये कैरम इवेंट में जो लास्ट 2-3 राउंड्स हमने देखे, बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से ये प्लेयर्स खेल रहे थे वो देखने का भी बहुत मज़ा आया. तो इसके साथ बहुत बहुत बधाई महर्षि भाई आपको, मैं MCF के स्टाफ को, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, रोटरी क्लब को, रेफरीज को और सारे पार्टिसिपेंट्स को. कुछ पार्टिसिपेंट्स जीत नहीं पाए होंगे लेकिन पार्टिसिपेट करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो इसके साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you, Nihar bhai.
Now, as everyone mentioned that the tournament was really a good success, but there are quite a few dignitaries who has worked day in and day out for this tournament to make it a big success. So we would like to acknowledge the efforts of few people. I'll just like to mention all, as I call out the names, I request everyone to please give them a big round of applause for the efforts they have taken. First is Parvinder Singh, the chief referee of this tournament. A big round of applause for him. Next is Assistant Chief Referee Vijay Shedla. Technical Director, who's also the treasurer of Maharashtra Carrom Association, Ajit Sawant. The Tournament Director, Shri Arun Vedansan. Joint Technical Director, who's the Joint Secretary of Maharashtra Carrom Association, Ketan Chikle. Our Carrom and Chess Subcommittee members, a big round of applause for them as well. And the staff of MCF who's done a wonderful job, a big round of applause for them as well. Also, to all the Carrom family members who supported this event, a big round of applause for our Carrom family members. Thank you so much. Now let's start with the prize distribution ceremony, and we'll start with the women's singles event, and we'll go from the 8 number rising to the top till 2 number. I request our managing committee member Chandrakant Patel to give away prize for the 8th and 7th position in the women's singles category, and at the 8th position we have Samruddhi Ghadigaonkar. Chandu, please come. Next, Aisha Khan, 7th place. Thank you, Chandru. I now request our Honorary Vice President, Dr. Chandrakant Lalu, please come forward and give away prize for the 6th and 5th position. At 6th position is Rinki Kumari. Fifth place we have Akansha Kadam. Thank you, Lalan sir. I now request the member of Rotary Club of Borivali, Advocate Sumedha Raoji, to please come forward and give away prize to 4th place in women's singles, and that is Shruti Sonavne Pal. Thank you, madam. Next, for the 3rd place, I request our past president Harish Cheda sir to please come forward and give away prize for the 3rd place, that goes to Mitali Patel. Thank you, Harish bhai. For the runner-up of this event in the women's singles category, for that I request our Honorary Secretary Satish Sharma sir to please come forward. And the runner-up in the women's singles category is Ambika Harit.
you, sir. Now I request our subcommittee member and dignitary from Rotary Club of Borivali, Hemant Ashar, to please come forward. We'll move to the men's singles category now. Same way we'll go from 8th position. I request Hemant Bhai to give away prize to the 8th prize holder in this event in men's singles is Sanjay Manyar. Thank you, Hemant Bhai. I now request our committee member Hemant Shah to come forward and give away prize to 7th position, and that goes to Sameer Ansari from Thane. Well, I now request the past president of Rotary Club of Borivali, Hemant Mehta sir, to please come forward and give away prize to the 6th position holder in men's singles category, that is Omkar Tilak. Omkar is left for the day, so Ketan Chakra will be accepting the prize. Thank you, Hemant sir. I again request our Vice President Chandrakant Lalan sir to please come forward and give a prize to the 5th position in men's singles category, and that is Nilansh Chiplungar. Thank you, sir. I now request Secretary of Maharashtra Carrom Association, Shri Arun Kedar, to please come forward and give away prize to the 4th position in men's singles category, and that is Praful More. Our past president Harish Cheda sir to please come forward and give away prize to the 3rd position in men's singles category, and that is Sagar Magmare. Now the runner-up in men's category, I request Neha Jambusaria sir to please come forward. Runner-up in the MCF 10th Maharashtra State Ranking Carrom Tournament is Pankaj Pawar. Sir, please be there. I now request all the dignitaries to please come forward to award the winner of 10th MCF Maharashtra State Ranking Tournament. Everyone please come forward. Please. Please, sir. Guys, a big round of applause to the winner, Mohammad Gufran. Along with this, winner in the women's category, Prajakta Narayankar. Gufran, you have to be here. You have to be here for the photograph.
We'll take a photograph. So I request all the winners